Dear students of class 8, how are you all student? Student, I'm your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Student, as you know, chapter 11 from your book, chapter 11 friction is under process, and under this today's topic, in my previous video that I have explained to you about the static friction. What is about the static friction? And then after I have explained to you about the limiting friction and a little bit about the kinetic friction. Now today I will explain you about the kinetic friction. So kinetic friction takes place when two objects are moving against each other, pushing the desk on from one corner to another is the example of kinetic force. Kinetic force that creates kinetic friction is of two types: sliding friction and rolling friction. Suppose if you are just pulling a box on a floor surface, so the lower surface of the box is totally in touch with the surface of the floor, and as it in the large area of the box is in contact with the floor, so the friction that will act is on the larger surface area of the box which is in contact with the floor. That's why the sliding friction that will act at the base of that box, between the base of the box and the surface, will be more than compared to the rolling friction. So students, sliding friction, the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body, okay, is called the sliding friction. For example, when a coaster is moved over the flat surface of a table, the opposing force is called sliding friction. Sliding friction is less than the static friction. So student, sliding friction is less than the static friction. Now come about the rolling friction. What is rolling friction? Student, the opposing force that comes into play when one object is actually rolling. Suppose in first example which I have given about the sliding friction, the same box and the same surface. But if we put a cylindrical shaped pipe or log of wood under the box and push behind the box, from behind the box, if you push it, if you apply the force, there the box will easily move by the help by on the support of this cylindrical shaped wooden log, as because the surface of the log that has come in contact with the surface is very less than in the previous, मीन्स जब उस बॉक्स के नीचे लकड़ी का एक सिलिंड्रिकल शेप पाइप नुमा आकार का लकड़ी डाल दिया गया, तो अब इसके सरफेस एरिया जो टच में है सरफेस से, अब वो बहुत कम है इसके पहले की कंपेयर अगर आप करें। पहले में क्या था, बॉक्स का पूरा नीचे वाला सरफेस, बॉटम सरफेस एरिया टोटल ज़मीन की सतह पे टच में था, जिसके कारण एक लार्ज सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा था, और जिसे हमने कहा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट हियर, जैसे कि हमने बताया कि उस सेम बॉक्स और सेम सरफेस, बट अब इस बॉक्स के नीचे हमने वुडन लॉग जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप में है, उसको जब हमने एक दो लॉग या तीन लॉग उसके नीचे डाल दिया बक्से के नीचे, अब just imagine that now the whole surface of the box is not in touch with the surface, but only a thinner area of the log, cylindrical log, is in touch with the surface. So when very less area is in touch in the surface, that will create less pressure and less force, and it will move, there will be very less friction, okay, and it will move smoothly. So rolling reduces the friction. A ball or a wheel of a cycle or cycle rolling over the other surface is an examples of the rolling friction. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे अगर पहिया लगा दें
सपोज दैट उस पेटी को अगर हम उसके नीचे फ्लैट सरफेस हो, अगर मुझे किसी फर्श पे घसीटना हो तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा, पर उसी पेटी के अगर नीचे चारों कॉर्नर पे चार पहिए लगा दें, चार रोलर लगा दें, और फिर अगर आसानी से एक बच्चा भी पुल करे या पुश करे तो बड़े आसानी से वो लुढ़कता हुआ या डुगुड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है, और ऐसी जगह पे जहाँ रोलिंग टाइप के ऑब्जेक्ट लगे हुए हों वहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाइड होता है वो उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट, you can see as the figure given by side here, under this box, or you can see under the duster, okay, pencils has been put, and when it is been pulled, the duster is very easily rolling on that, on behalf of on the by the help of those pencils, which shows that there is less friction applied to stop that moving duster. So next is that you will find that it is easier to move the block now. The force required is always less than the sliding friction. So the force applied here will always be less than compared to the force applied in this condition. Okay. So student, the force required is always less than the sliding friction of the same body. This explains why sliding in machine is replaced by the rolling by the use of the ball bearing. Now dear student, few questions arising here. Cartilage is present in the joints of our body, which helps in their smooth movement. With advancing age, the cartilage wear off. Due to regular rubbing between the bones, the cartilage tones off. Which would this affect the movement of the joint? There will be joint pain. The bones will now get attached with each other, and there is a friction while moving the body parts. Then there will be pain in the joints. The wearing of the cartilage will increase the friction. As a result, movement of joint will become difficult, which may lead to the joint pain. A marble is allowed to roll down on the inclined plane with a fixed height. At the foot of the inclined plane, it moves on the horizontal surface covered with a silk cloth. Okay, on which type of surface it will very smoothly it will move, with a covered with a silk cloth, covered with the layer of sand, or covered with the glass sheet. On which type of surface? So student, covered with glass sheet, because glass is very much smooth than the other two clothes, the silk cloth or sand. It is most smoother than the other two. So glass sheet will be more easily allow the marble to slide down or to roll down. On the surface covered with sand, it will cover the least distance because sand is maximum factor against its motion. So the question is that which will become difficult to lead the joint? Sorry, which will lead difficulty? Which will create difficulty? That is the sand surface. So on the surface of covered with the sand, it will cover the least distance because sand offers maximum friction against the motion. Now, dear student, fluid friction. What is fluid friction? So, fluids are the substance which can flow, just like air and water. So, student, these two are called the fluid friction, just like if the friction created by air or water. Object moving through air and water experience fluid friction. For example, the movement of cars and aeroplanes is opposed by the friction offered by the air molecules. Similarly, water and other liquid exert frictional force when objects move over them, through them. Okay, when any object is moving toward the surface, toward the floor, or when any object is moving in the water, then fluid friction reduces the speed of the object. Fluid friction reduces the speed of the object. Similarly, fluid friction reduces the speed of the object traveling through the air. So अगर कोई वाहन सड़क से गुजर रहा है तो सड़क पे जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके टायर्स और फ्लोर के बीच में एप्लीकेबल होगा। ओके, अगर कोई वाहन पानी में मूव कर रहा है तो उसके लोअर सरफेस, जैसे सिप जहाज, पानी वाले जहाज का लोअर सरफेस और वाटर सरफेस का अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। सेम केस
aeroplane or any birds is flying in the air, so its body surface and between the body surface and the air it's flying, these two surface acts a frictional force that is called the fluid friction. Now, dear student, it adds an amount of fuel released by car, aircraft. Now, next thing is that understanding air resistance. How we could feel the air tries to resist the free movement of any object. Take a sheet of paper, hold it flat at some height. एक पन्ना लीजिए, उसके कुछ ऊंचाई पर रखिए. नाउ लेट द पेपर फॉल एंड नोट द टाइम. अब उस पेपर को गिरने दीजिए और उसके टाइम को नोट कर लीजिए. Note the time takes to reach the ground. Ensure that there is no air current while conducting these activities. Suppose that आप जो ये कर रहे हैं, गिरा रहे हैं कागज़ को, मान लीजिए कोई हवा का सोर्स ना हो, हवा नहीं मूव कर, there is no air current. Again, take the same sheet of paper लीजिए and crumble it into a lump, और उसको मोड़ के एकदम उसको हाथ में दबा के उसको मोड़ दीजिए, एक बॉल शेप दे दीजिए राउंड, एंड अलाउ टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, और उसे कुछ ऊंचाई से गिरने दीजिए. डज इट टेक द सेम टाइम एज बिफोर द रीच? क्या सेम टाइम लेगा? नहीं. क्यों स्टूडेंट, क्यों सेम टाइम मिलेगा? क्योंकि पेपर पूरा फैला हुआ था, तो एक लार्ज एरिया पे नीचे से एयर उसको रोकने का प्रयास कर रहा है. लार्ज एरिया पे नीचे का से अपथ्रस्ट एयर का प्रेशर पड़ रहा है, जो कि उसको नीचे आने में थोड़ा लेट, मतलब थोड़ा समय रोक रहा है, तो ज़्यादा समय लगेगा. पर वही जब उसको बॉल बना दिए पेपर को फोल्ड करके, तो अब उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, जो उस हवा को चीरते हुए जो पेपर बॉल आ रहा है, क्योंकि पहले क्या था, पेपर पूरा फैला हुआ था तो ज़्यादा हवाएं उसको रोक रही थी. अब वो बॉल के शेप में हो गया, तो बहुत कम एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो बहुत कम उसकी हवाएं रोकेंगी, तो वो उससे कई गुना अधिक तेज़ी से नीचे गिरेगा. You will notice that the same time taken in the first case is more than the second case. This is because the friction of air is more than the first case. Now, student, drag. What is the meaning of drag? Drag is the name given to the frictional force exerted by fluid. ड्रैग उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम है जो वाटर और एयर में एप्लीकेबल, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है हवा में या पानी में, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ द ऑब्जेक्ट स्पीड विद रिफ्लेक्ट टू फ्लूइड, हायर द ऑब्जेक्ट स्पीड ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. जितना अधिक ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा उतना ग्रेटर उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ओके, जितना तेज़ से हवा में कोई विमान या कोई चिड़िया उड़ेगी, उतना तेज़ से हवा उसको रोकने का प्रयास करेगा. द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है उसके स्पीड पे, नेक्स्ट उसके साइज पे. जितना अधिक बड़ा उसका साइज होगा उतना स्लो वो प्रोसेस होगा. लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, ग्रेटर विल द फ्रिक्शन फोर्स. जितना अधिक बड़ा साइज होगा उतना अधिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. नेचर ऑफ फ्लूइड, हायर द विसिडिटी, जितना फ्लूइड गाढ़ा होगा, मीन्स हवा जितना गाढ़ा होगा, मॉइस्ट होगा, या पानी जितना गाढ़ा होगा, उतना अधिक उसमें मूव करने वाली चीज़ को वो रोकेगा, में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. अगर एयर is more dense due to the water vapor filled up in moist air, or you can say if the water is more you can say viscous, गाढ़ा ज़्यादा है, तो वाटर केस में और एयर केस में तब उसमें मूविंग करने वाली ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा उस पर अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, जो कि उसको रोकने का प्रयास करेगा. और लाइक दिस वे दिस फ्लूइड फ्रिक्शन ट्राइज टू, इफ दिस मोर डेंस, जितना अधिक गाढ़ा होगा उतना अधिक उसको रोकने का प्रयास करेगा. ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शंस एक्टिंग ऑन द. तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहे हैं, अगर वो मूव करना चाहते हैं तो इन फ्रिक्शन से उसको ओवरकम मतलब इन फ्रिक्शनों को उभर के, उन फ्रिक्शनों के पावर से कहीं अधिक पावर उसमें अप्लाई करना होगा, तब जाके वो मूव करेगा. Objects move through the fluid have to overcome friction again acting on them, because of which they lose energy. Hence to minimize this, objects are given, और इस फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को स्पिंडल शेप या यू कैन से उनके बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप दिया जाता है. स्पेशल शेप जो कि होता है, आगे की तरफ पतला होता है, जो कि हवाओं को या पानी को बड़े आसानी से चीरते हुए ऊपर बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं.
All vehicles are designed to have such shape which reduce fuel frictions. सभी vehicles कुछ इस प्रकार डिज़ाइन हुए हैं जो जिसके कारण फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है. बॉडीज ऑफ बर्ड्स एंड फिशेज, चिड़ियों और मछलियों की जो बॉडी की मूवमेंट हुई, विच मूव्स अबाउट इन एयर, जो हवा मूव करती है, एंड वाटर हैव इवॉल्व टू स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी में कन्वर्ट हो गई है. दीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा. एंड हेयर बाई लूजिंग द एनर्जी, और एनर्जी लॉस होना कम हो जाएगा. वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्या क्या तरीके हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस सरफेस. फ्रिक्शन जो है सरफेस के रफनेस से होता है. अगर सरफेस का रफनेस दूर हो गया तो फ्रिक्शन दूर हो जाएगा. पॉलिशिंग, इफ़ वी पॉलिश सरफेस, अगर हम इस सरफेस को पॉलिश करें, इट बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज रिड्यूस, वो स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है. थ्रू पॉलिशिंग अनइवननेस ऑफ द सरफेस रिड्यूस, पॉलिश करने से उसके ऊपर का फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, यानी फ्रिक्शन वहाँ पे कम एक्ट करता है. ए स्लाइड इज ए पार्क, स्लाइड इज सॉरी स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कई प्रकार के फ्रिक्शंस हैं जिसके कई अलग तरीके उनको पूछा जा रहा है. पॉलिशिंग क्या, अगर सरफेस को स्मूथ बना दिया जाए तो इजीली स्मूथ उसके ऊपर मूव करेगा. लुब्रिकेंट, अगर ऑयलिंग की जाए तो easily we could go to meet. Okay, next student, lubricating. By applying oil to the surface we can reduce the friction. When we apply lubricant to the surface, a thin layer of lubricants can form over there, and moving surface do not directly rub against each other. Due to this oiling, the friction gets reduced and the object will move very smoothly. A lubricant has much less friction than the surface. Therefore, lubricating reduces the friction. So these are the method how to reduce the friction. First is that polishing the surface, so the roughness will go off and it will move smoothly. Next is lubricating. Oiling the surface makes it smooth and the object will move very smoothly. Sometimes we use some lubricant in the form of powder also, just like in the carom board, playing carom board. You have seen, student, that you apply powder on that carom board to just reduce the roughness, and your striker or your what you can say, the the carom board, on the carom board the strikers might move very smoothly. Okay, dear student. Next is that in a cycle sometimes the ball and bearing goes off due to regular use, so you have to apply greater pressure to move the pedal. Okay, and if you change the ball and bearing, it become very smooth to run. Okay, dear student. Now next is that separation of surface by air. Another way to reduce the friction is to separate the surface by air. There is a, you can see, hovercraft. You can see here is an hovercraft. You can see here, student, here is a hovercraft which runs on water as well on land also. So while when it is in the water area, this rubber tube is not flattened, but as it comes to the surface area, to the beach area, the tube under that ship get flattened, and very easily it moves on the water as well as in on the surface near to sea source. So this you can see here, student, separation of by the means of air. When this tube is filled with air, okay, this is how the hovercraft moves at the lower layer of air between the hull of water. The layer of air reduces friction. So if there comes a layer of air between the two surface contact, okay, that will create less pressure, and due to less pressure there is a less friction, allowing the hovercraft to move easily. Okay, dear student. So student, today I have explained you about the kinetic friction, in which I have explained you sliding friction, rolling friction,
Then I've explained you about a few questions I have written, explained you. I've explained about the friction in fluid. Next, I've explained about the drag. Then after I've explained about the streamlined body shape of the birds. Then way to reduce friction, I've explained that is a polishing surface, lubricating, okay, using ball and bearing, separation of the surface of by air, separation of surface by air. So these are all, and making a streamlined body shape. These are all the methods. How could we stop these things by reducing the friction? So student, today I have explained that to here. Meet you in the next lecture video. Till then, thank you student. Have a nice day. So student, whatever that has been taught in the class from here, you must go through it, revise it, and listen the video carefully. Okay student? Thank you student. Have a nice day.